Sorry, actually, the class was interrupted in between. Sorry, actually, due to the internet issue, class got interrupted. So I'll share the link in the group again. So persons who are joining this link only, please go through the previous as well, previous video, because we were in between. So let me share the link. Just wait a minute. You know. Okay, dear. So we were discussing the question. So this is not the something ki, you will have these questions in your exam or not. The thing is how we can think of, how we can imagine the basic concepts of line and plane. So what I have assumed ki whenever you have question like this, I will take an arbitrary point on the line. What is the approach? Taking an arbitrary point on given line at distance r. So when I was teaching you the conceptual part, there I told you, dear fellows, कि taking any point from this point at a distance r is given by, so q point के coordinates क्या होंगे बोलिए कंगे line. I will take the line as x minus 1 upon 2 equals, I will take the parameter r here. I will take points now. X equals to will be x minus 1 equals to, if I put x minus 1 upon 2 equals r, so x will be 2r plus 1. Similarly, y will be 3r plus 1. Similarly, z will be 3r plus 2. So this will give you the coordinates of q as 2r plus 1, 3r plus 1, 3r plus 2. Now what you have assumed, dear, दिखेगा, since q lies on plane, so it must satisfy equation of plane, right or not? So 2 into, what is the coordinate? 2r plus 1 minus 3 into by 3r plus 1 plus z. Z coordinate is 3r plus 2 plus 5 equals to 0. So if you solve this, what you are gonna get? 4r minus 9r minus ka 5r plus ka 3r. So I will get minus 2r. 2 plus ka 2 minus ka 3 minus ka 1 plus ka 2 plus ka 1 plus 6 equals to 0. This implies r ka value 3. So if r ka value is 3, so required point is q हमारा था क्या? 2r plus 1, 3r plus 1, 3r plus 2, 2r plus 1, 3r plus 1, 3r plus 2. So for we got r equals 3, q will be 7, 10, 11. That is your answer. So this is how we solve these easy questions, but through these questions we can revise our concepts well. Please note down. Good evening, Kajal Yadav.
I hope this question will be clear, and moreover, I'll try to say, please grab this concept, and that will help you in further concepts. Have you noted this? Shall I proceed to the next question, please? Everyone? So let's have the next example now. And the question is, find the distance of the point. Yes, that will give us chance again to think about concepts. Find the distance of the point. Find the distance about the of the point -1, -5, -10. From where he wants, from the point of intersection of the line, from the point of intersection of the line, x minus 2 upon 3 equals y plus 1 upon 4 equals z minus 12 upon 2, and the plane x minus y plus z equals to 5. So can anyone apply, please? What concept you will apply here? Tell me. Because in the previous lecture we had better clarity over these things. और यहाँ से भी अभी आपको clearly दिख रहा होगा. Is this noted? Everyone? Is it noted? Okay, dear. So can you try to solve this question, please? And persons who are doing first time 3D, for them I would like to tell you, आराम से first learn the approaches, and in the second revision you will have better clarity at your hand. So पहली बार में don't be over possessive कि यार मेरे को क्यों नहीं आया करके. First time तो you have to learn from my side, okay? अभी देखेंगे same concept. You have a line dear which is passing from the point 2 minus 1 12. So we have a line which is passing from 2 minus 1 12. DCs are 3 4 2. DCs of the line are 3 4 2. मैं मान लूंगा let line meets or intersects the plane का इक्वेशन चेंज कर दिया है. क्या दिया है? x minus y plus z equals to 5 at q. So what will happen? What will be the arbitrary point over this? बोलिए. Since q will be, यहां से लिखेंगे ना, we will assume this as r, right? So the coordinate will be 3r plus 2, 4r minus 1, 2r plus 12. This will satisfy the equation x minus y plus z equals to 5. That is x की जगह
3r प्लस 2, बाई की जगह 4r माइनस 1, z की जगह 2r प्लस 2, 12 sorry, that goes to 5. So you have 3 minus 4, that is minus 1, plus ka 2, so it is plus ka r. 2 plus 1 3, 15 minus 10. Check it out please. Is it so? So अभी अपने को q क्या मिल जाएगा? If I take that value, so minus 30, r का वैल्यूज में माइनस में आ रहा है क्या? पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? 3r minus 4r. Oh, that is 12r. I'm sorry, actually what the question they have given, no, that is 12 plus 2r. इससे तो यही आएगा, बट उनके अगर मैं आंसर को चेक कर रहा हूँ, सो व्हाट दे हैव डन इज 3r plus 2 minus 4r, 12r plus 2. अच्छा, इसको ऊपर नीचे कर दिया है. प्लीज एडिट दैट क्वेश्चन इफ यू वांट टू क्रॉस वेरीफाई द आंसर. दे हैव द थिंग्स लाइक दिस, अदरवाइज वो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा. मतलब दे हैव द अदर डाटा, आर नेगेटिव में आ गया, कट ही नहीं करेगा. बेसिकली व्हाट डज दैट मीन? इफ यू गेटिंग आर एज नेगेटिव, that means distance is negative, means you don't like this line will not intersect this. So although हमने डाटा थोड़ा सा अलग ले लिया, इसलिए फिर भी अपने को we have a beautiful explanation कि if r comes out as negative means line is not intersecting the plane, means this point at r distance does not lying over this. So actually उन्होंने जो ले रखा, so you can have interpretation for this as well. Very good, like blessing in disguise for us, right? So ultimately q क्या मिल जाएगा? 2 minus 1 and 2. 2 minus 1 and 2. That simply implies कि p itself lies over the plane, right? तो ऐसे करके मजा भी ले लेंगे यहाँ पर. This implies p itself lies on plane and p you are getting as q. पूछा क्या है? So required distance किसके किसके बीच में? -5 -10 between and 2 minus 1 2. So that is given by 2 plus 1 का whole square minus 1 plus 5 का whole square 2 minus 10 का whole square. What is the value you are getting? That is your answer. लिख देंगे फटाफट. सो थिंग इज, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन में रॉन्ग हो रहा है कुछ करके, बट अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा यू कैन इंटरप्रेट ज्योमेट्रिकली एज वेल. प्लीज एडिट दैट डेटा. Okay. 16, 319, 144, 169. Yes, 13 is the right answer.
Is that noted? So next example is find the image of the point. Find the image of the point 357 in the plane. In the plane. Can you imagine this question geometrically? What it does is like what it is trying to say? Can you imagine the question, please? And how you can approach this question? So be on the board, please, everyone. Okay, what does it says? Suppose that we have this plane, and plane is 2x plus y plus 6z equals to 6. अब देखेंगे मुझे चाहिए लेट से दिस इज द पॉइंट P. I want image of this. अभी if you want to imagine, suppose that this is the plane and this is a point you want image of this point in this plane. So image like let's say अगर आपके पास ये है और मुझे इस पॉइंट का इमेज चाहिए, it will be P dash where this R will be the middle point. P dash is image of P. R is middle point of line joining P and P dash. Right or not? So underline this word. इसी concept को यहाँ पर apply कर दे. So let's say this is P dash. If I draw a line joining P and P dash and I want P dash, ध्यान से देखते रहना. P dash, I do not know what is that. Okay, dear. But clearly, R is the middle point of PP dash. Right or not? So if R is the middle point of PP dash, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? R के coordinates will be x1 plus x2 by 2. Right or not? Middle point कैसे निकलता है? अरे बाप रे. अब देखिएगा, since R lies on the plane, right or not? If R lies on the plane, so it must satisfy. बोलो हाँ या ना? It must satisfy. There can be some different ways. So one way I am telling you here, other way also I will tell. So अभी अपने को क्या मिल जाएगा? 2 into alpha plus beta by 2 plus beta plus 5 by 2 plus gamma plus 7 by 2 equals to 6. But we have three unknowns, alpha, beta, gamma. Equation 1. तो कैसे alpha, beta, gamma पता करेंगे भाई? But what exactly alpha, beta, gamma are? You're getting my point? Now we will move on the approach क्या होना चाहिए अब मेरा. देखिएगा, be on the board please.
if I find a line joining this point and this point. So a line joining 2 points, कहाँ गया, अल्फा बीटा गामा एंड 357. दूसरा अप्रोच हो सकता है ए लाइन, देखेगा ध्यान से, पासिंग थ्रू, ए लाइन passing through a fixed point 357 and with DCs as 217 211, sorry, देखिए ध्यान से, since line is perpendicular to plane 2x plus y plus z equals to 6, whose DRS, प्लेन के DRS कैसे पता चल जाते हैं, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट. So for line L will be 2. अगर आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया, अगर आप चाहें तो सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. सॉरी, सिंपली वी कैन टेक L as 2, M as 1, N as 1. सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन क्या होती है? अभी देखिएगा, वाई आई हैव टोल्ड यू दीज 3 डिफरेंट अप्रोचेस. Reason being, when you will be in your mains exam hall, you have to write both of the papers at the same day. So इतना minute level पे हर चीज को याद करना possible नहीं होता है. So for me, like if I think like as a student, I feel like we must have some different approaches in our mind, and let's apply that in the exam hall according to the demand of the question. सो अभी यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए आप कि जब भी इमेज वाला क्वेश्चन होगा, आई विल फॉलो दिस अप्रोच नो मैटर, बट व्हेन वी आर इन द डिस्कशन सेशन वी मस्ट try by different approaches as well, right? What is the problem in that approach, then only we will come to know. So अभी अगर मैं इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लूं, let's say this is a point which is at distance r, तो r के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे मुझे बता दो, 2r+3, r+5, r+7 lies on plane. So if lies on plane, so it must satisfy 2 into 2r+3 plus y plus z equals to 6. r का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहां से, 4r हो गया, so 6r प्लस कितना बन गया यहाँ से, 3 + 2 6, 3 + 2 2 3 6 11 18. ये वापस से का वैल्यू -2 क्यों आ रहा है, बट मिनट, लेट मी चेक दिस. इट इज गेटिंग एज -9r मिल रहा है, 4r 5r 6r आ रहा है, 2r किसके कोऑर्डिनेट 2 है, 2x. नहीं, प्लेन का इक्वेशन गलत लिख दिया है, 2x - y + 2z, तो वहां से तो मिल जाएगा, ठीक है. इसी प्लेन के लिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है. r का वैल्यू अगर -2 इस पे रखेंगे तो दिस आई विल बी गेटिंग एज r का पॉइंट क्या मिल जाएगा, -4 + 3 -1 3
or -2. Just wait a minute, I will say some explanations as well. पहले आप उसको उतना लिख लीजिए. I'll say all the things. आर नेगेटिव के लिए जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लेन पर पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा. फेयर एनफ. एक बार उसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं. नोट डाउन प्लीज. एवरीवन प्लीज नोट दैट. अब क्या फ्रॉम 1 एंड 2 अल्फा बीटा गामा के वैल्यू बता दो. अब क्या बचा यार. आर के कोऑर्डिनेट यहाँ से ये है. 2 में देखिए आर के कोऑर्डिनेट क्या है. सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स. अल्फा प्लस बीटा कहाँ से आ गया ये. हट. अल्फा प्लस 3 सही तो लिखा था उस टाइम. x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 बाई z1 प्लस z2 बाई 2. अल्फा प्लस 3 बाई 2 को कंपेयर करो -1 के साथ. सो यू विल गेट अल्फा प्लस 3 इक्वल्स -2. सो अल्फा का वैल्यू -5. सिमिलरली बीटा का वैल्यू, सिमिलरली गामा का वैल्यू. लिख दीजिए प्लीज एवरीवन. प्लीज लिखिएगा नीचे. ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, on comparing 1 and 2 we get alpha equals beta equals gamma equals क्योंकि both of the points give the same coordinates. Okay dear, answer is -513. Check कर लेना. Let's have the next question now. Find the distance of the point from the plane. ये तो बता ही दिया था अभी. Prove that distance of the point from the line that you can do now. Example 7, 8 you can try by yourself. The book which I have provided you. Now the different examples 7, 8 you can try by yourself is the same logic they are applying. PN is drawn perpendicular. Yes, that as well you can do. Not an issue in that. DRS same question. DC is DRS. ठीक है. Let's do the next question. Find the symmetrical form. Find the symmetrical. Please don't forget to practice questions from that book which I have provided you, because similar questions you can get in that examples. Find the symmetrical form of the equation of line determined by the planes determined by the planes x plus y minus z equals to 2 and 2x plus y plus z equals to 1. So this is the problem with us. Try please.
I have already told you कि how to convert given line किस में दे रखा है, unsymmetrical form में into symmetrical form. What the approach I have told you? Can anyone revise? Please reply. Please reply. What the approach I have told you? जल्दी बोलेंगे. What is the 2 points strategy I told you? Rajat. Everyone. What is that 2-point strategy? क्या यार? Step 1. Let LMN be DCs of line. So since we want to find the line represented by this, so प्लेन के DRS परपेंडिकुलर, तो लाइन के साथ में उनका प्रोडक्ट विल बी 0. 1 into L plus 1 into M minus 1 into N will be 0. 2 into L 1 into M plus 1 into N will be 0. How to determine LMN? बोलिए. क्लियरली आई टोल्ड यू, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं. L के लिए we will take the determinant 1 1. M के लिए we will take the determinant sorry, N के लिए. So what I will be getting here, L upon 0, M upon -2, -3, N upon -1, right or not? So यहाँ से अपने को LMN मिल गया. The next point is to अपने को चाहिए वो point, right? Finding point, that means fixed from which line passes. I told you clearly, let's take it for z equals to 0. So from given equations क्या मिल जाएगा अपने को, x plus y equals to 2, 2x plus y equals to 1. So on solving, I will be getting minus x equals to 1. So x का value -1. So y का value 3. So point is -1, 3, 0. So required equation of line x minus alpha upon L, that is 0, by -3. एलिमेंट चेक कर लेना एक बार, कुछ दिक्कत होगा तो बताइएगा. चेक इट आउट. मैं देख रहा हूँ नो वन हैव रिप्लाइड, दैट मीन्स यू डिडंट रिवाइज द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली. सिंपल सी बात है. जबकि मैंने डे 1 पर द लेक्चर 4 आई गेस, लेक्चर 5 होगा, L इक्वल्स 2 आ रहा है. अच्छा मैंने मिस कर दिया, दिस इज -1. सो 1 - 1 दैट इज 2. बाकी ठीक है. ओके कनिष्क, थैंक यू. सो उस दिन जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, हमें लगा होगा पता नहीं क्या, रजत नहीं पूछा था, किसने पूछा था कि सर ये पॉइंट कैसे निकालेंगे. अभी दिख रहा है ना कैसे झूठ मूठ का तमाशा है. इजी ओनली. ओके
Rajat, are you getting the point? कोई बात नहीं, आज रिवाइज कर लेना। देखिए 3D को मैं पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से। यकीन मानिए 2023 वाला बैच किसने अटेंड किया था? आलिया गॉट अटेंड, राइट? उस टाइम पे मैंने 3D ऐसे नहीं पढ़ाया था। उस टाइम एक कॉन्सेप्ट बताया, फिर एग्जांपल बताए, फिर कॉन्सेप्ट बताया, फिर एग्जांपल बताए। This year I have changed the completely because I have done my own R&D over the topic, and as a student I felt कि नहीं यार, this can be the better way, क्योंकि अदरवाइज हम उनको समराइज ही नहीं कर पाते। हमें हमेशा लगता है 3D में पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले हैं। तो इस बार मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। एक जगह सारे फॉर्मूले रखो। अभी देखो ना, स्ट्रेट लाइन आप देखोगे हार्डली 7-8 पॉइंट्स, प्लेन 7-8 पॉइंट्स, डीसीज 2-3 पॉइंट्स। अब जाके रिवाइज करने में आपको जो कन्वीनियंस आएगा, अभी नहीं, you will feel this change after completion of 3D, I'm pretty sure। क्योंकि सीधी सी बात है ना, जब उस पर इतना एफर्ट डाला गया है, मुझे पता है वो रिजल्ट देगा ही। Is that noted, everyone? So let's have some more example. Question is, prove that the lines x equals to a by plus b, z equals to c by plus d, and x equals to a dash by plus b dash, z equals to c dash by plus d dash, those lines are perpendicular if and only if a dash plus c dash plus 1 equals to 0. Can you check it please? Can everyone check it please?
Is that done? चले देखेंगे when we were doing forces in 3D in the topic statics, right? There I have taken an example and it was like something like p by q as well. वहां पर हमने इक्वेशंस को इस टाइप से सिमेट्रिकल फॉर्म में डाला था, राइट? सो द लाइक that was the application of this basic concept. So means अभी देखेंगे, we know that a line in symmetrical form is given by x minus alpha upon l. अभी देखेंगे. So if we can reduce given equations in this form without following the previous without following procedure in previous example. देखिएगा, if we can, then it's fine, means nothing wrong in that. So देखेंगे ध्यान से, x equals to ay plus b, z equals to cy plus d. So if you observe from here, x minus b upon a equals to by, this is z minus d upon c equals to by. So अभी इन्हीं planes का intersection ही तो है. So if I solve these two, what I'll be getting is x minus b upon a equals by equals z minus d upon c. So this is a line represented by first pair of planes. Similarly, for second pair of planes, what I can have, x minus b dash upon a dash equals to by z minus. So अभी आप देख लीजिए, let's say this is the line 1 2 and this is the line 1. For 1 and 2 to be perpendicular, उनके DCs का product must be 0. Say yes or no. बोलिए, ठीक बात है या नहीं? तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे. अगर इजीली रिड्यूसिबल है तो इजीली रिड्यूस करके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट पूछा है तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है? नोट डाउन प्लीज फास्ट. ओके शिबू.
Okay, dear. Everyone. So let's have the next example now. So that the line x minus 4 upon 1 and 4x minus y plus 5z equals sorry, दो प्लेन दे रखे हैं दूसरी लाइन के लिए 2x माइनस 5y minus z minus 3 are coplanar. Please try to recall your concepts and attempt this question, everyone. Two lines are coplanar. What I told you in that conceptual clarity. Recall कीजिए फटाफट सभी लोग. If they are in the same plane, हाँ that is fair. What is the procedure, मतलब कैसे करेंगे उसको, क्योंकि अपने को शो करना है ना. बोलो बोलो. It is not good यार. No one is replying. फिर वो उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, क्या मतलब है उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का? एनी प्लेन थ्रू द लाइन इज एस प्लस लैम्डा. हाँ, अभी करेक्ट आ रहे हो, अभी करेक्ट आ रहे हो. फेयर फेयर. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? प्लेन निकाल लिया थ्रू द लाइन 2. ठीक बात है. लाइन 1 भी उससे मतलब सेम प्लेनर है तो उस पे पास होगी, मतलब उसको कंटेन करेगा. द प्लेन कंटेन्स द लाइन 1. उसके लिए अपन ने क्या यूज किया था, बस मुझे वो चाहिए, वो बता दो बस. पॉइंट चूजन आर्बिट्रेरी शुड बी ऑन द प्लेन. किसके ऊपर? नो नो. रजत कुमार ठीक है, शिबू ठीक जा रहे हैं. फिर देखो अभी मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मस्त मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज.
फिर अच्छा चलो ठीक है, देखिए क्या अप्रोच होना चाहिए इस पर। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द इक्वेशन और द प्लेन containing the line 4x minus y plus 5z minus 7 2x minus 5z minus is given by s1 plus lambda s2 equals to 0, 4x minus 5 y plus 5z minus 7 प्लस s1 हो गया प्लस लैम्डा इंटू s2, so that is 2x minus 5y। ओके डियर, सो अभी अपने को क्या मिल जाएगा, 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस -1 माइनस का 5 लैम्डा इंटू वाई प्लस का 5 माइनस का लैम्डा माइनस का 7 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अभी याद आया सबको, अभी याद आ रहा है। ऑब्वियसली these two lines to be coplanar, these lines to be coplanar, line कहाँ गया, sorry, the line must be contained in the plane 1, right or not? So what are the conditions now? That is what I was asking, because when I was telling you the concepts there I clearly told you कि अभी क्या क्या हो सकता है करके। याद आया सबको? अभी आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है? प्लीज राइट डाउन फास्ट। एग्जाम्पल 22 ऑन द बुक, इफ यू वांट टू क्रॉस चेक द आंसर यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक है? लेट मी स्टॉप द क्लास हियर, आई विल मीट बाय टुमारो। आई एम सॉरी डियर्स, आई एम सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, so I have to leave the class here only. Please revise that, we will meet by tomorrow, ठीक है? I'm sorry, जैसे ही ठीक हो जाएंगी चीज़ें I will take extra sessions, please don't get panic over the things. Thank you, bye। इसको लिख लेंगे आप लोग तब तक।